हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਪਲਾਈਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 1 ਦੇ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਲੈਟ ਅਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ that what is chemical equation। ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ in which some terms are written on left hand side of the arrow and some terms are written on right hand side of the arrow. This is called a chemical equation. Now its definition. Definition means paribhasha. It is defined as the brief representation of a chemical change in terms of symbols and formulae of the substances involved in it. Means ਕਿਸੇ ਵੀ chemical change ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ represent ਕਰਦੇ ਹਾਂ symbols and formulae ਦੀ form ਵਿੱਚ ਤਾਂ it makes a chemical equation. For example, in this equation, carbon and oxygen are reacting with each other and they are forming carbon dioxide. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਐਂਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। Here carbon and oxygen are reacting, so they are known as reactants. Reactants means ਜੋ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ and ਜੋ ਨਵਾਂ substance ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ that is known as product. And in this equation carbon dioxide is a product. Now we will discuss about the essentials of a chemical equation. Essentials ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। These are: it should represent a true chemical change. It means कि chemical equation ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ it should be true. True ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ chemical change ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। So we should always represent a true chemical change by chemical equation. Second point is it should be balanced. Balanced ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? Balanced means ਕਿ ਜਿਹੜੀ chemical equation ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ means the number of atoms of each element should be same on both sides of the arrow. That means ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਟਮਸ ਐਰੋ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ देयर आर 3 एलिमेंट्स, जिंक है, हाइड्रोजन है and chlorine है. If we see the number of zinc atoms on left hand side, there is only one zinc, and on another side that is right hand side ਤੇ ਵੀ zinc ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਐਟਮ ਹੈ। If we count the number of chlorine atoms, chlorine left hand side ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? chlorine ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 2, that means there are 2 chlorine atoms. And if we see on right hand side chlorine ਦੇ 2 atoms right hand side ਤੇ ਵੀ ਹਨ, that means number of atoms chlorine ਦੇ ਜੋ ਹਨ same ਹਨ। If we see the third element hydrogen, there are 2 atoms of hydrogen on left hand side of the arrow, and if we count on right hand side there is also 2 number of hydrogen atoms. That means कि ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ number of atoms are same on both sides of the arrow. That means this equation is a balanced equation.
सो जिहड़ी भी कैमिकल इक्वेशन असीं लिखनी है इट शुड बी बैलेंस्ड। थर्ड जो असेंशियल है कैमिकल इक्वेशन दा दैट इज़ इट शुड बी मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर का मतलब है कि जदों भी असी कैमिकल इक्वेशन लिखनी है तो वी शुड रिप्रजेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्टांसिस। जिस तरह कि असी हाइड्रोजन की गल करते हाँ असी हमेशा एज H2 लवांगे ना कि H। सिमिलरली अगर असी ऑक्सीजन की गल करते हाँ तो वी विल टेक O2 जिहड़ा कि मॉलिक्यूलर फॉर्म है ऑक्सीजन की ना कि ऑक्सीजन। सो जिहड़ा भी सबसटेंस असी लेना है इट शुड बी इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म। सो देयर आर 3 एसेंशियल्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। लेट अस रिवाइज। First is it should be true chemical change, it should be balanced and it should be molecular. Now let us discuss about the significance of chemical equation. Significance means which information is given by chemical equation. Chemical equation सानू की information देंदी है? It gives 2 types of informations. First is qualitative information and second is quantitative information. Now we will discuss these 2 types of information one by one. First is qualitative information. Qualitative name तो ही पता चल गया कि सिर्फ quality बारे गल होएगी। A chemical equation tells us about the names of reactants and products. In this type of information जिहड़ी chemical equation है वो सानू की दसदी है names of reactants and products. So अगर असी इस chemical equation नू देखते हाँ we can decide कि किहड़े reactants हैं। reactants मैं तुहानू already दस्या है कि जिहड़े भी एरो तो लैफ्ट हैंड साइड हैं दीज आर रिएक्टेंट्स एंड एरो तो राइट हैंड साइड हैं दे आर प्रोडक्ट्स। इफ यू सी दिस रिएक्शन रिएक्टेंट्स केड़े हैं? यस देयर इज जिंक एंड HCl. HCl means hydrochloric acid and these are reacting with each other and forming 2 products. केड़े केड़े products बन रहे हैं? ZnCl2 that is zinc chloride and H2 means hydrogen gas. So qualitative information, just by watching the equation we can tell the names of reactants and products कि इस equation दे विच इस chemical change दे विच केड़े केड़े reactants and products involved हैं। Next information है quantitative इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव नेम तो ही इंडिकेट हो रहा है कि इट विल टेल अस अबाउट क्वांटिटी। ये सानू क्वांटिटी बारे कोई इंफॉर्मेशन देगी। इट टेल्स अस नंबर 1 द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्वालिटेटिव विच सानू नेम पता लगे सी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दे बट हेयर वी विल know about the number of reactants and products कि किन्ने number of reactants हैं and किन्ने number of products हैं जो इस reaction दे विच involved हैं। Again I am taking the same example, zinc plus 2HCl changing into ZnCl2 plus H2. In this reaction 1 एटम ऑफ जिंक सानू किस तरह पता लग्या कि जिंक का एक एटम है क्योंकि जिंक के अगे कोई भी नंबर नहीं। अगर कोई नंबर नहीं लिखा होया फ्रंट ते इट मीनस 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल है। 1 एटम ऑफ जिंक रिएक्ट्स विद 2 molecules of HCl. HCl is हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अगे है नंबर 2 दैट मीनस ये किन्ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं 2। प्रोडक्ट्स दा नंबर जो बन रहा है दैट इज़ ZnCl2। अगे अगेन कुछ नहीं लिखा दैट मीनस 1 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक क्लोराइड एंड H2 दे अगे भी कोई नंबर नहीं है दैट मीनस 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज़ बीइंग फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन।
सो फर्स्ट क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन सानू मिली कि किन्ने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं एंड किन्ने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। सैकेंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो सानू मिलती है दैट इज़ अबाउट द रिलेटिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। पहले सानू दस्या सी कि नंबर, नाउ इट विल टेल अस अबाउट द रिलेटिव मासेस, किन्ना मास रिएक्टेंट्स दा रिएक्ट कर रहा है एंड किन्ना मास प्रोडक्ट्स दा बन रहा है। दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन बाय केमिकल इक्वेशन। लेट अस सी हाउ। अगेन in the same reaction as we are discussed earlier, जिंक, सानू सब नू पता है कि जिंक का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 65। सो 65 पार्ट्स जो मास ऑफ जिंक दैट इज़ कंबाइनिंग विद, अगर असी HCl का मास कैलकुलेट करिए, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास प्लस क्लोरीन का है 35.5, दोनों नू प्लस करके 2 नाल मल्टीप्लाई क्यों किया है, बिकॉज HCl दे अगे नंबर 2 है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। सो अगर असी इनू काउंट करते हैं कैलकुलेशन तो बाद आ जाएगा 73। सो 65 पार्ट्स जिंक दे मास जिहड़े है कंबाइन कर रहा है बाय 73 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ZnCl2 का अगर असी मास कैलकुलेशन तो बाद देखिए इट कम्स आउट टू बी 136। ये 136 किमें आया, अगेन एस मॉलिक्यूल दे विच एक जिंक है, जिंक का मास है 65 प्लस क्लोरीन का मास इज़ 35.5, 2 दे नाल मल्टीप्लाई किया है बिकॉज Cl दे पैर विच 2 है, 2 एटम्स हैं। सो इट कम्स आउट टू बी 136 एंड हाइड्रोजन दे एक एटम का मास हुंदा है 1, सिंस देयर आर 2 एटम्स इट्स मास इज 2। सो हेयर वी कैन सी दैट 65 पार्ट्स बाय मास ऑफ जिंक combines with 73 parts by mass of HCl and it forms 136 parts of ZnCl2 by its mass and 2 parts by mass of hydrogen। सो ये सानू की दस रही है कि किन्ना मास रिएक्टेंट्स का कंबाइन किया एंड किन्ना मास न्यूली फॉर्म होया प्रोडक्ट्स का। अगर तुसी इन्हां दोनों मासिस नू रिएक्टेंट्स दे एंड प्रोडक्ट्स का टोटल करोगे इट विल बी इक्वल। नैक्सट क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो सानू किसी भी कैमिकल इक्वेशन तो मिलती है दैट इज़ इट टेल्स द रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इफ एनी। मीनस कैमिकल इक्वेशन सानू किसी भी गैशियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स दे वॉल्यूम बारे भी दसती है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस रिएक्शन 1 mole of zinc reacts with 2 moles of HCl to produce 1 mole of zinc chloride and 22.4 liters of hydrogen gas। That means in this reaction जो हाइड्रोजन गैस है इसका जो वॉल्यूम है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का दैट इज़ 22.4 लीटर्स। सो किसी भी गैशियस मीनस जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैस फॉर्म विच है उस दे वॉल्यूम बारे भी इंफॉर्मेशन जो है दैट इज़ गिवन बाय केमिकल इक्वेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो असी स्टडी करना है दैट इज़ अबाउट लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स का मतलब है कि केमिकल इक्वेशन दे विच किहड़ियां कमियां हैं या जिहड़ियां चीज़ां सानू केमिकल इक्वेशन तो जिहड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, व्हाट इज़ दैट इन्फॉर्मेशन। इट डज नॉट टेल अस अबाउट नंबर 1 द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मीन्स केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अबाउट फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब है कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की स्टेट बारे नहीं पता लगता कि इज़ इट इन द सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैशियस स्टेट। So this information is not provided by chemical equation. This is its first limitation.
Second limitation is it does not tell us about the concentration of solution. Concentration solution ਦੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ concentrated solution ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਾੜਾ ਘੋਲ, ਐਂਡ dilute solution ਜਿਹੜਾ solution ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ dilute solution ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। But this information is not provided by chemical equation that whether that solution is concentrated or dilute. Third information which is not given by chemical equation is about the conditions like temperature, pressure, etc. Means ਕਿਹੜੀਆਂ conditions ਦੇ under ਉਹ chemical reaction occur ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹਨ। This is not told by chemical equation. So it is one of the limitations of chemical equation. Next जो limitation है, it does not tell us about the heat changes during the reaction. Heat changes ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ reaction ਦੇ during heat change ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀਟ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੋਲਵ ਮੀਨਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਬਜ਼ੋਰਬਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। Fifth limitation of chemical equation is it does not tell us about the rate of reaction. Rate ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ speed, कि वो reaction fast है या slow है। This is also one of its drawback that it does not provide any information regarding the rate of reaction. Sixth number ते है it does not tell the nature of reaction. Nature ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ कि ये सानू ये information नहीं दिंदी कि whether that reaction is reversible or irreversible. Reactions ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। Reversible means the reaction which can occur both in forward as well as backward direction. ਜਿਹੜੀ reaction ਦੋਨੋਂ directions ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, occur ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, that is called reversible reaction. And ਜੋ reaction ਸਿਰਫ ਇੱਕ direction ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, that is called irreversible reaction. But this information is not given by chemical equation that whether the reaction is reversible or irreversible in nature. Next limitation is it doesn't provide any information about the formation of precipitates or evolution of gas. ਕਈ reactions ਦੇ ਵਿੱਚ precipitates form ਹੁੰਦੇ ਹਨ and ਕਈ reactions ਦੇ ਵਿੱਚ gases evolve ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, but chemical equation ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ information ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। So again it is its limitation. So ਇਹ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ chemical equation ਦੀਆਂ drawbacks or limitations. Now we will remove these limitations one by one. So in this topic, that is removal of drawbacks of chemical equation. First, physical state. First जो साडी drawback सी, that was about the physical state, that it doesn't tell us about the physical state of reactants or products. But this जो है chemical equation या इसकी drawback है, it is removed by using S for solid state, L for liquid state, G for gaseous state and AQ for aqueous state. It means अगर असी इस रिएक्शन दे विच देखिए कार्बन दे नाल S लिखिया है, S means कि जो कार्बन है that is in the solid state, oxygen is in the gaseous state, carbon dioxide is again in the gaseous state. So this drawback is being removed by writing S, L, G or AQ for various states. Second limitation C about concentration of solutions. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ that solution is concentrated or dilute.
But to remove this drawback, we will write DIL for dilute solution and CONC for the concentrated solutions before the formula. It means ਕਿਸੇ ਵੀ dilute solution ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ solution ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DIL ਲਿਖਾਂਗੇ and ਕਿਸੇ ਵੀ concentrated solution ਦੇ ਲਈ CONC before the formula of that solution. Next drawback was about conditions like temperature and pressure, and it is removed by writing these conditions on the arrow. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਈਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਅਬਵ ਔਰ ਬਿਲੋ ਦਾ ਐਰੋ। ਐਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਹੀਟ ਚੇਂਜਸ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਰਿਮੂਵਡ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਹੀਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਹੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟ ਇਜ਼ ਇਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦੈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। And in the next example I have written here minus. Minus sign ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। So again this limitation is removed by either writing plus heat or minus heat along with the chemical equation. Next drawback C, that was about the rate of reaction, that whether that reaction is slow or fast. Again it can be removed by writing slow or fast on the arrow. Arrow ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ slow ਅਗਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ slow ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ fast ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ fast ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So this drawback is again removed. Next ਜੋ drawback ਸੀ, that was about the nature of reaction, that whether the reaction is reversible or irreversible. ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਬੈਕਵਰਡ, ਮੀਨਸ ਡਬਲ ਐਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਡਬਲ ਐਰੋ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਕਰਿੰਗ ਇਨ ਬੋਥ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਵਰਡ as well as backward, means reaction forward भी चल रही है and backward भी चल रही है. So it tells about the reversible nature of the reaction. और अगर साडी reaction irreversible है then we will put a single headed arrow, only one arrow will be there only in the forward direction, which shows that this reaction is irreversible in nature. Seventh drawback C, it doesn't tell about the formation and evolution of gas. Formation of precipitate या फिर गैस इवॉल्व हो रही है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ from chemical equation ਤੋਂ। Again this drawback is removed by writing precipitate ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ downward arrow ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ and ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੈਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ upward arrow show ਕਰਨਾ ਹੈ। For example, in this reaction AgNO3 plus NaCl ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ and they are forming AgCl, that is silver chloride and NaNO3. ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ AgCl ਦੇ ਜੋ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਬਣਦੇ ਹਨ it is shown by this downward arrow. ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਸ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏਗੀ it will be shown by upward arrow. So this is again removed, this drawback is again removed. So we can say that we have removed all the drawbacks of chemical equation in this topic. So this was all about various limitations and removal of these limitations of chemical equation. Thank you.